ध्यान मुद्रा. या मुद्रेला समाधी किंवा योग्य मुद्रा म्हणून ओळखले जाते. ही मुद्रा बुद्ध शाक्य मुनी, ज्ञानी बुद्ध अमिताभ आणि चिकित्सक बुद्ध इत्यादी बौद्धांच्या गुणधर्मांना दर्शवते. या मुद्रेत उजवा हात डाव्या हातावर पूर्णपणे बोट उघडून मांडीवर ठेवण्यात येतो. भूमिस्पर्श मुद्रा. या मुद्रेला पृथ्वीला स्पर्श करणे, टचिंग द अर्थ असे देखील म्हणतात, जी बुद्धांच्या ज्ञानप्राप्तीला दर्शवते. कारण बुद्ध म्हणायचे की पृथ्वी त्यांच्या ज्ञानाची साक्षी आहे. या मुद्रेत उजवा हात उजव्या गुडघ्यावर ठेवून तळहात आतल्या बाजूला ठेवून त्याला जमिनीच्या दिशेने नेण्यात येते. वरद मुद्रा. ही मुद्रा अर्पण, स्वागत, दान, दया आणि प्रामाणिकता यांना दर्शवते. या मुद्रेत डावा हात पूर्णपणे उघडून तळहात बाहेरील बाजूने असतो, तर उजवा हात हा शरीरासोबत नैसर्गिकरित्या ठेवण्यात येतो. करण मुद्रा. ही मुद्रा वाईटापासून वाचवण्याचे सूचित करते. या मुद्रेत तर्जनी आणि करांगडीला वर उचलून इतर बोटांना मोडले जाते. ही कर्त्याला श्वास सोडून रोग अथवा नकारात्मक विचारांमधून बाहेर निघण्यास मदत करते. वज्र मुद्रा. ही मुद्रा पंचतत्व म्हणजेच वायू, जल, अग्नी, पृथ्वी आणि धातू यांना दर्शवते. या मुद्रेत उजव्या हाताची मुठी करून त्यात डावा हाताच्या तर्जनीला वरील दिशेने अशा प्रकारे ठेवले जाते की उजव्या हाताची तर्जनी तिला स्पर्श करू शकेल. वितर्क मुद्रा. ही मुद्रा बुद्धांच्या शिक्षेचा प्रचार आणि परिचर्चेचं प्रतीक आहे. या मुद्रेत अंगठा आणि तर्जनीच्या वरील भागाला जोडले जाते आणि इतर बोटांना सरळ ठेवले जातं. अभय मुद्रा. ही मुद्रा निर्भयता अथवा आशीर्वादाचे प्रतीक आहे, जी सुरक्षा, शांती, परोपकार आणि भय दूर करणे याचं प्रतिनिधित्व करते. या मुद्रेत उजव्या हाताला खांद्यापर्यंत उचलून बाहूला दमडून हाताच्या बोटांना वर उचललं जातं. उत्तर बोधी मुद्रा. ही मुद्रा दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जेसोबत स्वतःला जोडून सर्वोच्च आत्मज्ञानाची प्राप्ती दर्शवते. या मुद्रेत दोन्ही हात हृदयाजवळ ठेवून दोन्ही हातांच्या तर्जनी एकमेकांना स्पर्श करत वरच्या दिशेने असतात, तर इतर बोट ही आतल्या बाजूने मोडलेली असतात. अंजली मुद्रा. याला नमस्कार मुद्रा किंवा हृदयांजली मुद्रा देखील म्हणतात, जी अभिवादन, प्रार्थना आणि आराधना दर्शवते. या मुद्रेत दोन्ही हात हे पोटाच्या वर मोडलेल्या स्थितीत असतात. हाताचे तळहात हे एकमेकांना जोडलेले असून दोन्ही हातांची बोटे एकमेकांना स्पर्श करीत असतात. भगवतो अरहतो सम्मा
नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा तस्सा भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनम् साधु साधु साधु
बाहुं सहस्रमभिनिम्मित सायुधन्तम् गिरिमेखलमुदित घोरससेनमारम् दानादिदम् विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि मारातिरेकमभियुज्यित सब्बरतिम् घोरं पनालवकमख मतद्धयखम् खन्ति सुदन्त विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भुवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नालागिरि गजवरम् अतिमत्तभूतम् दावर्गिचक्रमसनीव सुदारुणन्तम् मेत्तम् भुसेक विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि उत्थितखड्गमतिहत्थ सुदारुणन्तम् धावन्ति योजन पथङ्गुलिमालवन्तम् इद्धिविसङ्खत मनोजितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि कत्वानुकट्ठ मुदरम् इव गब्धिनीया चिञ्चाय दुःखवचनम् जनकाय मज्जे सन्तेन सोमविधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सच्चं विहाय मतिसच्चकवादकेतम् वादाभिरोपितमनम् अति अन्धभूतम् पञ्ज्ञापदीप जलितो जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगम् विभुदम् महीद्धिम् पुत्रेण थेरभुजगेन दमापयन्तो इद्धूपदेश विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुग्गाहदिद्धि भुजगेन सुदट्ठहत्थम् ब्रह्मं विशुद्धि ज्युतिमेद्धि
बकाभिधानम् याणागदेन विधिना जितवामुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि ये तापि बुद्ध जयमङ्गल अर्थगाथा यो वाचको दिने दिने सरते मतन्ति हित्वादनेक विविधानि चुपद्धवानि मोक्षम् सुखम् अधिगमेय नरो सपञ्यो तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि त्याग मूर्ति तू शांत चित्त तू योग रूप संसारी दया प्रेमान मानवतेचे प्रतीक तुझी ईश्वरी
केसर बादाम के दूध से मेहमान नवाजी हो, क्लासिक स्वीट लस्सी से बॉडी तरोताजी हो, मैंगो लस्सी आपकी गर्मी को कर दे सुपर कूल, और मसालेदार मटका झटका छाछ के साथ आप गर्मियों को जाएंगे भूल। हल्दीराम के ट्रेडिशनल हेल्दी ड्रिंक्स के साथ गर्मियों में रहिए रिफ्रेशिंग। जागली पहाट उठ शिंप सडा माऊले, दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पाऊले, दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पाऊले. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं. अनमोल दोन रत्ने लाभली आम्हा या भूवरी, अनमोल दोन रत्ने लाभली आम्हा या भूवरी. एक शांतीचा प्रणेता, एक शांतीचा प्रणेता, एक क्रांतीचा पुढारी, अनमोल दोन रत्ने लाभली आम्हा या भूवरी. दुःख निवारण्याचा मार्ग सांगितला गौतमाने, दुःख निवारण्याचा मार्ग सांगितला गौतमाने. जगदीप स्तंभ ठरला जिंकून करुणेने, महामानव तो झाला, महामानव तो झाला, मानवतेचा पुजारी. एक शांतीचा प्रणेता, एक शांतीचा प्रणेता, एक क्रांतीचा पुढारी, अनमोल दोन रत्ने लाभली आम्हा या भूवरी. जीवन संघर्षाचे जगुनी अस्मिता जागी केली, जीवन संघर्षाचे जगुनी अस्मिता जागी केली. बनला तो भीम बाबा, दीन दलितांचा वाली, जगी क्रांतीवीर ठरला,
जगी क्रांतीवीर ठरला, समतेचा तो पुजारी, एक शांतीचा प्रणेता, एक शांतीचा प्रणेता, एक क्रांतीचा पुढारी, अनमोल दोन रत्ने लाभली हमाया भूवरी. राजश्री गौतम ललाट धातु, निदंगत सेरुवाविल महासैगिरि वंदना करम. संबुद्ध राजश्री गौतम ललाट धातु, निदंगत सेरुवाविल महासैगिरि वंदना करम. मे महाभद्र कल्पयहि बुदु गरुतर, कपु संद को नागम काश्यप गौतम मुनिवर. मे महाभद्र कल्पयहि बुदु गरुतर, कपु संद को नागम काश्यप गौतम मुनिवर. हे पूजनीय शारीरिक धातु निरंतर, हिम किरु वेर वनिनु मत्तक मल्पुद कर. संबुद्ध राजश्री गौतम ललाट धातु, निदंगत सेरुवाविल महासैगिरि वंदना करम. අප බුදුන් තෙවැනි වරලක වැඩි පුදුම් උදාන, සමරා කළෝ බුදුහුමෙ බිම පුෂ්පෝපහාරය. අප බුදුන් තෙවැනි වරලක වැඩි පුදුම් උදාන, සමරා කළෝ බුදුහුමෙ බිම පුෂ්පෝපහාරය. අපි යුගත සිරස බැඳ 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 මෙවන් විහාරය, निर्वाण सुख विधिमु कारणय कर संसारय. संबुद्ध राजश्री गौतम ललाट धातु, निदंगत सेरुवाविल महासैगिरि वंदना करम. संबुद्ध राजश्री गौतम ललाट धातु, निदंगत सेरुवाविल महासैगिरि वंदना करम. अपि वंदना करम, अपि वंदना करम, अपि वंदना करम, अपि वंदना करम, अपि वंदना करम. Paragate parasangate bodhisoha, yatao mangate paragate parasangate bodhisoha, yatao mangate paragate parasangate bodhisoha, yatao mangate paragate parasangate
wanna live, I wanna feel it deep inside every night. I wanna fly, I wanna dream, draws like a star from the universe. I wanna live, I wanna feel it deep inside every night. Gate paragate parasangate bodhisohate bodhisayatao gate paragate parasangate bodhisohate sayatao gate paragate parasangate bodhisohate bodhisayatao gate paragate parasangate bodhisohate sayatao gate paragate parasangate bodhisohate Siyatao gate paragate parasangate bodhisohate Siyatao gate paragate parasangate bodhisohate Siyatao gate paragate parasangate bodhisohate I wanna fly, I wanna dream, draws like a star from the universe. I wanna live, I wanna feel it deep inside every night. I wanna fly, I wanna dream, draws like a star from the universe. I wanna live, I wanna feel it deep inside every night. I wanna fly, I wanna dream, draws like a star from the universe. I wanna live, I wanna feel it deep inside. पहले मेहमान इंतजार की मिठास को चखना हमें आता है। लम्हों के हैं ये टुकड़े, लम्हों में है कुछ बातें, आजा इनमें ही बना ले चाशनी सी कुछ यादें। મામા તમને અમારી સગાઈ મંજૂર છે? मंजूर छे। दूरियों को एक पल में मिटाना आता है। देश की मिठास हल्दीराम्स। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही जागली पहाट उठ शिंप सडा माऊले, दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पाऊले, दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पाऊले। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमीयन्ति
ये पमत्ता यथा मता। सील, समाधि, प्रज्ञा को बढ़ाने वाला अप्रमादी व्यक्ति अमृत निर्वाण को पाता है, लेकिन काम वासना सुख में फंसा हुआ व्यक्ति को हमेशा केवल मृत्यु ही मिलता है। बिना देर हुए धर्म की रास्ता पर चलने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है, लेकिन धर्म की रास्ता पर चलने में देर होने वाला प्रमादी व्यक्ति जीते जी मरे के समान होता है। एतं विशेषतो ज्ञात्वा अपमादं हि पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति आर्याणं गोचरे रता। अप्रमादी ज्ञानी व्यक्ति प्रमाद तथा प्रमाद के बारे में भली भांति समझता है, इसलिए वैसे लोग आर्य लोगों के उत्तम मार्ग को अपनाता है तथा अप्रमाद गुण से खुश हो जाता है। तेजाइनो साततिका निचं दल्ह परक्रमा फुसन्ति धीरा निब्बानं योगक्षेमं अनुत्तरं। वे ज्ञानी प्रज्ञावान व्यक्ति हमेशा ध्यान साधना करता है, मुक्ति के लिए निरंतर असामान्य प्रयास करते हुए धर्म की रास्ता पर चलता है। इसी कारण सभी भवसागर से पार जाकर अमृत निर्वाण को पाता है। उत्थानवतो सतिमतो शुचिकम्मस्य निसम्मकारिणो संयतस्य च धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशोभिवर्धति। जो धर्म की रास्ता पर चलने में मेहनती है, निरंतर सती स्मृति में रहता है, परिशुद्ध क्रिया से युक्त है, ज्ञान से मनन करके काम करता है, इंद्रियों को संयमित करके रखता है, धार्मिक ढंग से जीवन बिताता है, तो ठीक वैसे ही अप्रमादी व्यक्ति की कीर्ति प्रशंसा बढ़ जाती है। उत्थानेन प्रमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति। ज्ञानी व्यक्ति धर्म की रास्ता पर लगातार प्रयास करते हुए अप्रमादी रहता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, इंद्रियों को दमन करता है, वह उसी के द्वारा अमृत निर्वाण नाम का द्वीप बना लेता है और राग द्वेष मोह नाम की बाढ़ में नहीं डूबता है। पमाद मनुयुञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना अपमादञ्च मेधावी धनं सिद्धं रखति। अज्ञानी लोग काम वासना की सुख में फंसकर धर्म की रास्ता पर चलने में देर होते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग अप्रमाद में उसी प्रकार लगे रहते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने अमूल्य धन की सुरक्षा में लगे रहता है। मा पमाद मनुयुञ्जेथ मा कामरति संथवन्
अपमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। धर्म की रास्ता पर चलने में विलंब मत करो, काम वासना की सुखों में मत फंसो, काम वासना की सुखों में मत लगे रहो। बिना देर हुए लगातार ध्यान साधना करोगे तो महान निर्वाण सुख को पा सकते हो। पमादं अपमादेन यदा नूदति पंडितो पඤ්ඤාපාසාදමාරුයිහ අසෝකෝ සෝකිනින් පජං පබ්බතට්ඨෝව භුම්මට්ඨේ धीरो बाली अवेक्षति। ज्ञानी व्यक्ति अप्रमाद के जरिए प्रमाद को दूर करता है। इसके बाद वह ज्ञान से बने महल पर चढ़ता है। वहां से वह बिना शोक के दुखी जनता को देखता है। जैसे कोई व्यक्ति पर्वत के ऊपर चढ़कर नीचे रहने वाले लोगों को देखता है, ठीक वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानियों को देखता है। अपमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलसंव शीघ्रसो हित्वा याति सुमेधसो। धर्म की रास्ता पर चलने में विलंब करने वाले लोगों के बीच ज्ञानी भिक्षु बिना विलंब किए धर्म की रास्ता पर चलते हैं। नींद में डूबे जनता के बीच बिना सोए ध्यान साधना करते हैं। वो निर्वाण की ओर ठीक वैसे ही जाते हैं जैसे शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाला अश्व दुर्बल अश्व को दौड़ में हरा देता है। अपमादेन मघवा देवानं सिद्धतं गतो अपमादं पसंसन्ति पमादो गर्हितो सदा। वो शक्र देवराज इंद्र पहले मनुष्य लोक में रहते समय बिना विलंब किए पुण्य कर्म करने के कारण ही देवलोक में देवताओं के बीच श्रेष्ठ देवराज बन गए। तथागत बुद्ध लोग भी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं तथा प्रमाद की सदा निंदा करते हैं। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्यवा संयोजनं अनुन्थूलं दहं अग्गीव गच्छति। जो भिक्षु धर्म की रास्ता पर चलने में विलंब होने के खतरे को देखकर बिना विलंब किए धर्म की रास्ता पर चलते रहता है, तो वह ठीक वैसे ही छोटे बड़े सभी बंधनों को नष्ट करके अमृत निर्वाण की ओर जाता है। जैसे आग सभी चीजों को जलाकर भस्म करते जाती है। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्यवा अभब्बो परिहानाय निब्बानस्यैव सन्तिके। जो भिक्षु धर्म की रास्ता पर चलने में विलंब होने के खतरे को देखकर
बिना विलंब किए धर्म की रास्ता पर चलते रहता है तो वह धर्म की मार्ग से कभी भी भटकता नहीं है, वो निर्वाण के समीप ही होता है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। यानि भूतानि समागतानि बुम्मानि वायानि व अन्तलिके सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अतो विसक्कच्च सुनन्तु भासितं तस्मै भूतानि सामेत सम्मे मेत्तं करोत मानुष्या पजाय दिवाच रत्तोच हरन्ति ये बलिं तस्मै निरङ्कत अपमत्ता यं किञ्चि वित्तं निदवाहुरं वा सग्गेषु आयं रत्नं पनीतं ननो समङ्गर्ति तथागतेन इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु खयं विरागं ममतं पनीतं यदज्जगासक्य मुनि समाहितो न तेन धम्मेन समत्ति किञ्चि इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यं बुद्धसिद्धो परिवन्नहि शुचिं समाधिमानं तरिकन्यमाहो समाधिना तेन समो न विज्जति इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये पुग्गला अट्ठशतं वसत्ता चत्तारि एतानि युगानि हन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य शावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि इदम्पि संघे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये सुपयुन्ता मनसा दल्लेन निक्कामिनो गौतम शासनम् ते पत्तिपन्तामतं विगह्य लब्धा मुदा निभृतिं भुञ्जमाना इदम्पि संघे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यतीन्द्रकीलो पटविंसितोऽसिया चतुर्विवातेभिः असम्पकम्पियो ततोपमं सम्पुरुषं वदामि यो आर्यसत्यानि अवेच्च पश्यति इदम्पि संघे रत्नं पनीतम्
ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති ගුසප්පමත්තා නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පණීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සමාවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලම්බතං වාපි අදත්ති කිංචි චතුහ පායේ ච විප්පමුත්තෝ චචාබිඨානානි අබබ්බෝ කාතුන් ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපි සෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා අබබ්බෝ සෝතස්ස පටිච්චාදාය නබම්වතා දිට්ඨ පදස්ස උත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වනප්පගුම්බේ යථා පුස්සිතංගේ ගිම්මාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්මේ තතෝපමන් ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්ධේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදම්පි බුද්ධේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කීනම් පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරත් චිත්තායතිකේ භවස්මින් ඒකීන බීජා විරුල්ලිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යතයම් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු
පරිත්තං යම් වනන්තස්ස නිසින්නට්ඨාන දෝවනං මුදකම්පි විනාසේති සබ්බමේව පරිස්සයං සොත්තිනාගබ්බ උට්ඨානං යංච සාදේති තංකනේ තේරස්සංගුලිමාලස්ස ලෝකනාථේන භාසිතං කප්පට්ඨායි මහතේජං පරිත්තන්තං වනාමහේ යතෝහං භගිනි අරියාය ජාතියා ජාතෝ නාබිජානාමි සංචිච්ච පානං ජීවිතා හෝරෝපේතා තේන සච්චේන සොත්තිතේ හෝතු සොත්ති ගබ්බස්සාති යතෝහං භගිනි අරියාය ජාතියා ජාතෝ නාබිජානාමි සංචිච්ච පානං ජීවිතා හෝරෝපේතා තේන සච්චේන සොත්තිතේ හෝතු සොත්ති ගබ්බස්සාති යතෝහං භගිනි අරියාය ජාතියා ජාතෝ නාබිජානාමි සංචිච්ච පානං ජීවිතා හෝරෝපේතා තේන සච්චේන සොත්තිතේ හෝතු සොත්ති ගබ්බස්සාති යං කිංචි අතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධා පුතු රතනං බුද්ධ සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ යං කිංචි රතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධා පුතු රතනං ධම්ම සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ යං කිංචි රතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධා පුතු රතනං සංඝ සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සම්පීතියෝ විවජ්ජන්තු සම්බ රෝගෝ විනාශතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ
Sabbe Buddha Balappatta Paccikananchayam Balam Arahantanancha Tejena Rakkam Bandhami Samvaso Sabbe Buddha Balappatta Paccikananchayam Balam Arahantanancha Tejena Rakkam Bandhami Samvaso Sabbe Buddha Balappatta Paccikananchayam Balam Arahantanancha Tejena Rakkam Bandhami Samvaso Sadhu, sadhu, sadhu। अभी हम लोग रतन सूत्र चांटिंग किए हैं, अंगुलीमाल परित्य चांटिंग किए हैं। अभी हम लोग हमारे भारत देशवासियों को जो कोरोना से पीड़ित हैं एवं जिन लोगों को कोरोना नहीं आया है तथा सभी प्राणियों को सत्य क्रिया करेंगे, सत्य का बल फैलाएंगे। हमारे भगवान बुद्ध जी के बुद्धानुभाव बल से हमारे भारत देशवासी इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। एवं जो कोई भी प्राणी इस कोरोना वायरस से पीड़ित है उन सभी का ये रोग तुरंत से तुरंत दूर हो जाए, तुरंत से तुरंत दूर हो जाए। वे सभी लोग सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भगवान बुद्ध के द्वारा बताया हुआ इस रतन सूत्र के महानुभाव बल से, जिस रतन सूत्र में भगवान बुद्ध का गुण, श्री सद्धर्म का गुण, श्रावक संघ का गुण समन्वित है, इस रतन सूत्र के सत्य बल से हमारे भारत देशवासी इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। एवं जो कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है उन सभी लोगों का यह रोग इस सत्य बल से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। वे सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र सुखी हो। हमारे भारत देश से यह कोरोना वायरस जल्द से जल्द दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। एवं हमारे अंगुलीमाल भंती जी के महानुभाव बल से, अंगुलीमाल पारित्य के महानुभाव बल से हमारे भारत देशवासी इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। एवं जो भी लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है उन सभी लोगों का रोग इस सत्य बल से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। एवं इस बुद्ध शासन में निरोगी में अग्र थे हमारे अरहंत बक्कुल भंती जी। वे 160 साल जीवन बिताए थे, लेकिन 160 साल में भी उनको कभी भी एक भी दिन एक छोटा सा भी रोग नहीं आया। ये सत्य है। बुद्ध शासन में वे अरहंत बक्कुल भंती जी निरोगी में अग्र थे। ये सत्य है। इसी सत्य के बल से हमारे भारत देश से यह कोरोना वायरस जल्द से जल्द मिट जाए। सभी भारतवासी इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। एवं जो भी लोग इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उन सभी लोगों का रोग जल्द से जल्द मिट जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। भगवान बुद्ध के बुद्धानुभाव बल से, भगवान बुद्ध के धम्म के धम्मानुभाव बल से, भगवान बुद्ध के श्रावक संघ के महानुभाव बल से, इस रतन सूत्र के महानुभाव बल से हमारे भारत देश से यह कोरोना वायरस जल्द से जल्द मिट जाए, मिट जाए, मिट जाए। एवं सभी रोगी जो कोरोना वायरस से पीड़ित है
उन सभी का रोग इसी सत्य के बल से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। वे सभी लोग सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। एवं इस दुनिया में जितने भी लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन सभी लोगों का यह रोग इसी सत्य के बल से जल्द दूर हो, जल्द से जल्द दूर हो। एवं जो भी लोग अभी तक जिन लोगों को कोरोना नहीं आया है, वे सभी लोग सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। इस पूरे दुनिया से जल्द यह कोरोना वायरस इस सत्य के बल से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। साधु, साधु, साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि। So the 26th of May is Visakha Puja, a day in which Buddhists around the world recall and remember, celebrate the birth, the enlightenment, the parinibbana of the Lord Buddha. It's a time for us to reflect upon certain ways of dealing with our situation, certain ways of living our lives as human beings. It's not just the recollection of some historical event. So, as Buddhists, our belief in the enlightenment of the Lord Buddha is really a belief in the ability of, or the potential for enlightenment in the human being, and that includes ourselves, because the Buddha was enlightened as a representative of the human race, and his enlightenment was a proof of our capacity for enlightenment. So enlightenment might seem a long way away for most of us, but if we break it down very simply, it's a matter of training and a matter of education, a matter of abandoning all that is unwholesome and unvirtuous in our body, speech and mind, cultivating all that is skillful and wholesome and good, and of purifying our mind. So whatever way of life we lead, whatever our role in society, whatever our responsibilities may be,
these challenges are constant? How can we abandon the unwholesome within us? How can we cultivate what is good and wholesome? How can we purify our minds? The confidence that this is something that we can do and should do is vital. And the Buddha taught us that being born as a human being is in itself a great achievement. We must have created much good karma in previous lives to be here in the first place, but that it is our responsibility to make the very best use of this opportunity. Now, in the society today and in the world at large, we are going through a very difficult time, whether it's the actual physical suffering of COVID, or the grief that comes from losing a loved one to COVID, or the general fear and anxiety that we might become infected, or perhaps even more worryingly that members of our family might become infected by this virus. And then, of course, there is the very burdensome effects on our finances and on our livelihood and on the society at large. But here the Buddha reminds us that there is a distinction to be made between things that are very difficult to bear and to be with, and the suffering that we may experience as a result of that. And these two things are not one and the same. They can be separated. That is to say, we can go through very difficult times and yet not necessarily have to suffer from them mentally. And that's because mental suffering is always, to one degree or another, conditioned by cravings and desires. In the case of COVID, I think that it's very clear, isn't it, that one of the fundamental desires and thoughts that people have is that it shouldn't be like this, or I don't want it to be like this, or why is it like this? And so we expend a lot of unnecessary energy, and we run around in mental circles fighting against things that we cannot overcome. The situation is like this. In fact, of course, during this unusual or unique period, we are in fact facing very familiar challenges that, with or without COVID, we are subject to: old age, sickness, and death. Our lives are much more vulnerable than we would perhaps like to think. There are so many ways in which we can fall ill, or so many reasons for which we may have to be associated with things that we don't like, that we are separated from things that we do like, and that we are thwarted, we are unable to fulfill many of our most basic desires and needs.
So these kinds of challenge, how we deal with being associated, having to be close to, be binded with things we don't like, how we deal with separation from what we do like, how we deal with not being able to get what we want. These are universal facts of human existence, and the Buddha spoke of them, and they didn't arise with the Buddha either. They've been there as long as human beings have been in the world. So this period, the COVID period, is just one more expression of very familiar challenges that we all have to face at one time or another. Question is, how can we make the best of things that we can't do much about? Well, the ability to take care of our minds and not allow our mind to wander off and just to go round and round and round in circles with anxious thoughts is extremely important. And to be able to do that, you need the muscle of mindfulness and awareness. And this is why meditation practice is so important, because in meditation we are strengthening this mindfulness muscle. When we focus on a particular object, then the mind wanders off and we bring it back again and again and again, and not allowing our mind to become discouraged or bored. Then that ability to recognize when the mind wanders off and to bring it back in a peaceful but firm way, just as we would teach a child not to misbehave, with love and with firmness, then we find it easier and easier to do that. And we become aware when the mind is starting to get caught in toxic or depressive patterns of thinking, we can just let them go and re-establish awareness. When we are in the midst of a situation in which there's very much uncertainty, then the suffering comes because we want things to be certain. So when we can just embrace that uncertainty, yeah, right now we don't know, and be at peace with not knowing, and to bring our mind again and again back to the present moment, because this is our reality. The present moment is our true reality, and then we can ask ourselves, what can we do right now? Maybe not what we can do tomorrow or next month, or not thinking in the abstract, but thinking very concretely about what can we do right now, what can we do this morning, what can we do this afternoon, to make the best of the situation we find ourselves in, and learning to find ways to deal with the mind so we can keep the mind in a happy or content frame. So that's not doesn't mean repressing negative thoughts, but recognizing them and just very gently letting them go. But the practice of gratitude is a very helpful one here. When we're in a difficult situation, the mind tends to wander to all the things we don't have and all the things that are making our life difficult, but simply bringing to mind all that we have to be thankful for in our lives, all that we have been given, whether from our parents or our teachers or from our culture. There are so many things in our lives that when we stop and we think about them, then gratitude arises, and that gratitude is a great healer of the human heart. If during COVID you're in lockdown and you can't get out and about, and you're leading a rather sedentary life, then physical exercise is very important.
So these are basics. These are things we can do. We can look after our body, make sure we get plenty of exercise. We can look after our mind by developing the skills, meditation skills, particularly of mindfulness. And we can turn the mind to things that make it flourish and feel uplifted and happy, particularly through practice of gratitude. We can chant and recite mantras. We can do things together with our family. Acts of kindness for others are something that brings joy to our own hearts, and of course is helpful to others. And this time of COVID, there's nearly always someone who's worse off than we are, that we can do something, even if it's just a very small thing, to help others. And constantly looking to learn from this experience. Your life changes because of COVID. Are there things that have changed for the better? For many people's lives, they can realize how much of their life they used to waste. In lockdown, many people who used to go to pubs and bars and stay out late at night, no longer able to do that. And that's the suffering for them. But after a while, maybe they see, yeah, actually there's better ways of spending time than that. And people finding new hobbies, new pastimes. And so within what is generally a rather dark and difficult period, there are things that can be learned, and we can discover things that perhaps otherwise we might not have discovered. Most importantly, of course, as the Buddha teaches us, that life is very fragile, life is valuable. And this is something that we need to ask ourselves, that given the fact that we have no guarantees how long we're going to live in this world, how can we live in such a way that we feel we've done the best that we could every day? Some successes, some failures, but overall, we've really tried to create happiness and benefit for ourselves, and happiness and benefit for those around us. And this is a key Buddhist principle, that the happy and productive life is one in which we are educating ourselves, training ourselves, cultivating ourselves, and also sharing our efforts and our knowledge and our understanding and our goodness and kindness, and trying to create benefit and happiness in those around us. So I would like to offer the blessings of the Buddha and the Dhamma and the Sangha and all benevolent forces in the world, that we can all survive this difficult period, and that we can learn important things which will, in the long run, increase the quality of our lives, our inner lives, our lives in our family lives, and our lives in society.
So I'd like to end with a blessing. Yatha varivaha pura paripurenti sagarang evamivaito thinang petanang upakapati ichitang batitang tumhang kippamiwa samijjato saphe purentu sankapa janto panaraso yatha manijo tiraso yatha sapitiyo vivajanto sabharoko vinasato Matem Vatvantarayo Sukhi Thika Yukho Bhava Abhivatanasi Lisa Nityang Vatha Patyahino Chattaro Dhamma Vatanti Ayuvano Sukhang Phalang. बुद्धं शरणं गच्छामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तथागत बुद्ध विश्व के एक ऐसे प्रथम सामाजिक क्रांतिकारक जिन्होंने अपने समय में क्रांति की, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय ये मूल्य बुनियाद बनाकर विश्व में शांति और मानवता को पुनर्स्थापित किया। जो लोग, जो देश उनके पद चिन्हों पर चले और चल रहे, उनका उत्थान हुआ। किंतु जो लोग अज्ञानतावश बुद्ध के विचारों से अनभिज्ञ हैं, दूर है, उन्हें जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी नैतिक, प्रज्ञावान और अनुकरणशील प्रचारक तथा युवक युवतियों की है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कई बार उल्लेख किया है। विचार कितने ही महान क्यों ना हो, स्वयं कुछ नहीं करते, केवल किसी किताब में या किसी व्यक्ति के मन में रहना पर्याप्त नहीं है। इसे मृत विचार भी कह सकते हैं। उन विचारों का प्रचार प्रसार होना उस प्रकार है जिस तरह किसी पेड़ को खाद पानी देकर जीवित रखना है। तथागत बुद्ध के विचारों का, धम्म का भी ठीक ऐसा ही है। बुद्ध के संघ द्वारा आज कई देशों में धम्म स्थापित हुआ। वह संघ त्यागी और समर्पित भाव से ये महान कार्य कर रहा था और आज भी कर रहा है। भारत से प्रचारित प्रसारित बुद्ध का विचार, धम्म आज भारत के परिप्रेक्ष्य में कहाँ है? क्या केवल भिक्षु पर निर्भर रहकर हमें इसके दूर रहना चाहिए? क्या बाबा साहब ने हमसे ये उम्मीद की थी? कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति इन सवालों का उत्तर ना में देगा। उनके उत्तर में अगर ना है तो हमें भारत को प्रबुद्ध बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सकारात्मक भावनाओं के साथ इन बिखरे हुए प्रज्ञावान युवकों को जोड़ना होगा, संगठित करना होगा। हमारा लक्ष्य अगर महान है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित, त्यागी, समर्पित कार्यकर्ताओं का होना अनिवार्य है। आज के इस नवतंत्र ज्ञान के बीच रहकर युवाओं ने इस लक्ष्य के प्रति नए साधन संसाधनों का निर्माण भी करना है। आंदोलन में समय के साथ साथ साधन संसाधन की आवश्यकता होती है। तथागत बुद्ध के विचारों को नए संदर्भ के साथ जोड़कर सरल और स्थानीय भाषा के साथ समझाने की आवश्यकता है। गांव-गांव, घर-घर जाकर इस विचार को प्रचारित प्रसारित करना सभी के लिए मंगल है। बुद्ध के विचार शुरू में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंतिमतः भी कल्याणकारक ही है। ये संदेश स्वयं बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को दिया था। आज की हालत देखकर ये संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस समय था। आज हम सभी युवा संकल्प करते हैं कि बुद्ध के मानवतावादी विचारों का प्रचार प्रसार कर भारत को प्रबुद्ध करते हैं। इस कार्य से देश का मंगल होगा और अपने स्वयं का भी। बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि। खबरों से स्पेशल रिपोर्ट तक, संस्कृति से कला, साहित्य, सिनेमा तक, प्राचीन विरासत से आधुनिक टेक्नोलॉजी तक, मानवीय सभ्यता एवं संवेदनाओं का प्रतीक, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय का प्रवाह। आवाज इंडिया टीवी। मित्रों, आप प्रति माह अपने केबल ऑपरेटर को 200 या 250 रुपये महीना प्रति माह देते हैं। ऐसे में आपका हक बनता है कि वे आपका पसंदीदा चैनल आपको दिखाएं। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से ये चैनल शुरू करने का अनुरोध करें। बुद्धं शरणं गच्छामि।นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namaste, Jai Bhim, and in Thai we have Sawaddi to all Upasaks and Upasikas in India and around the world. First of all, I want to thank the members of Global Buddhist Congregation in Thailand, Kun Rosana, Kun Apinya, and Kun Sermsuk for having me in this program again. This is my second chance to give my reflection to the viewers of Global Buddhist Congregation in India. For those who do not know me, I am Prakru Suthi Sutta Sunthorn. My former name is Phra Mahasompong Siri Mangkalo. In Wat Phra Chiang Rai, the north of Thailand, it's around 60 kilometers from my town to the border between Thailand and Myanmar. Chiang Rai is north of Chiang Mai. The coming event, we will have Puttha Purnima, Puttha Chayanti or Vesak. In Thailand, we'll have on 26. I think maybe the same day in India. I had been in India for almost 10 years, from 1993 to 2003, studying in Banaras Hindu University, Varanasi in Uttar Pradesh, and also doing some volunteering work at Kushinagar and Buddhist circuits. My best place is the Kushinagar. We constructed the temple there. After completing my studying at Banaras Hindu University or BHU, I visit India almost every year, both for pilgrimages and tours. For the viewers in Maharashtra, you may know about Thai temple in Achanta, 2 kilometers from Achanta Caves. Thai Sangha Dhamma have been constructing a Thai temple there, and I am fortunate enough to help them too. We Thai people very indebted to India, you know. India is the land of the Buddha. Almost every aspect of Thai culture has Indian influence. In the case of religion, we have Buddhism, Hinduism, Muslim mixed together, and also animism. Thai language borrow a lot of words from Pali and Sanskrit. Even my name is Prakru Suthi. You can feel that it's Pali Sanskrit words. Also, if you know many things in Thailand, even some kind of plants
like mango, sugarcane were brought from India many hundred years ago. And so very famous in the world is Thai rice. Thai rice is called khao hom mali or hom mali rice. Actually, it is originated in India, and it was developed in Thailand and become Thai trademark called hom mali or basmati, like in India. So for Thai people, we feel very indebted to India in many ways, even like the lifestyle, especially Buddhism is the foundation of Thai culture, the foundation of Thailand. One of the most influential figures, influential thinkers in Thailand, his name is Puttatat Bhikkhu, Venerable Puttatat Bhikkhu. He wrote a book, and his title of the book is Little India, a little India, a little India. He called Thailand a little India because Thailand is like the representation of Indian culture in the area. So Thai people feel very grateful to India. India is the original place of Buddhism. But as you know, right now, the people in the world face the same problem. I'm very concerned and worried about India. I saw the news about the pandemic of COVID-19. The suffering of people in the world, Thailand, India, and everywhere is very immense. And India is the country that have very hard hit about COVID-19. I saw the terrifying news and with concern. In the beginning of this month, we had bad news from our friend in India, our beloved teacher, Professor Satyapal, the late head of the Department of Pali and Buddhist Studies in Delhi University, passed away in the beginning of this month. And last 2 days, we have the news of our friend in Rajakri in Nalanda, passed away, though it's not related to COVID-19. He's a Thai monk who's still studying in Nalanda University. Anyway, I saw also in the news the individuals, companies, institutions, organizations in India, they come out to help each other. Some provide food and shelter to others. Some provide free service. Some helping in transfer medical supplies. That is the good news. Also, it happened in Thailand. We try to help each other in many ways. In India, maybe quite difficult because many thousands of people pass away, and also the number of infected people is increasing. I heard about the shortage of oxygen and medical supplies. We heard many things about India in this around 2 to 3 months ago. I hope at this time the situation is better. The pandemic has no moral judgment, no religion, no understanding of borders. It affects all of us. Anyhow, you know that I think the pandemic is the global crisis. We have to fight. We have to eradicate it together. No single country can win this battle alone.
We must fight the disease together. I saw the news that people in India help each other. This is good news. This is the spirit. This is the called incredible India. The spirit that we fight together. That very good news. But as we are Buddhists, we follow the Buddha's teaching from the Buddha perspectives. The Buddha became the Buddha because he wanted to help others. If we study from Chataka's story, at the time that the Buddha was born as Sumedha Brahmin, a wealthy Brahmin, he gave away all his wealth to the needy. He gave away all his properties to others and become a wandering monk, become ascetic. At the time of the Buddha named Tipangara Buddha visit the town, and the ascetic or the Bodhisattva Sumedha had a chance to meet the Buddha. He gave his body to the Buddha by lying down on the dirt as a bridge for the Buddha and his followers to step or to walk over. In that moment, if Sumedha want to be enlightened or want to be Arahant, he would get enlightened very easily. Just a few lines of Dhamma. But the time Sumedha ascetic want to be the Buddha, not to want to be the follower of the Buddha. Why? Because his concern is about the other people, other beings. He not just want to liberate himself alone. In another story, we learn that the Buddha make a vow to become a Buddha because his determination is to help others. In his word, he said, Putto Potayang. I myself enlighten, I will enlighten others. Mutto Mojayang. I myself liberated, I will liberate others. Tinno Tarayang. I myself cross the ocean of samsara, the ocean of birth and rebirth. I will take others to cross too. This is the determination, resolve of the Buddha, of Sumedha, the Buddha to be, of Bodhisattva. So the Buddha become the Buddha or want to become the Buddha to help others, not just to reach the ultimate goal, Nibbana for himself. And at this time, we need to help each other. The Buddha consider what the quality, supreme quality he needs to become the Buddha. And he find 10 qualities, 10 supreme qualities of perfection. We call Dasa, Tassa Parami, or 10 perfections, starting from dana, giving, or generosity. So in this Vesak, in this Puttayanti, I want to bring you attention to the quality of the Buddha. These 10 qualities, take some qualities as a guideline for us. Like the first quality, generosity or dana. I think in this term, dana is very essential. Giving your food, shelters, medicine, or anything in our capacity to help, starting from our home, our parents, relatives, neighbors, to your community, to your country, and extend it into global level. Some may need food, some may need shelter, some may need transportation, some may need medical supply. All these. For the poor, they need food,
and necessity, for necessity. But for the rich, they need also. They need love and compassion. By the word giving, dana, it's just not giving. It also means not clinging to our idea, to caste system, to social differences, non-attachment. This is giving. This is dana. Some people blame others for the crisis. Some point to the government. Some point to some organization. That is not positive way. Dana is a kind of generosity, giving, and non-attachment. This is the most essential quality, supreme quality of the Buddha that we should observe in this moment, in this time. The second supreme quality is sila, morality or virtue. It means refraining from what is bad and doing what is good. The third supreme quality is renunciation or nekkhamma, which means renounce from worldly pleasures. In this time of crisis, we can interpret it as to renounce from social enjoyment, from social contact, from physical contact. Some of us may need to do self-isolation, or some of us may be quarantined. That we have to stay alone. We have to separate ourselves from society, from worldly pleasures. And the fourth quality is, the fourth perfection of the Buddha is panya, wisdom. In this moment, in this time of crisis, we learn and we observe the reality of things. Illness, the Buddha said, is common, is suffering. Suffering is a common thing. If we still have body and mind, we still suffer, because our body can grow, can get sick. Illness is natural. The disease is natural. We cannot eradicate the illness. Even we can eradicate disease or virus, but we cannot end the illness. So this kind of wisdom, we observe what is going on with balancing mind. We know that is the situation. Everything happened. It just happened. We have to have our mind clear and stable. If our mind is clear and stable, we can see the reality of the thing that is happening right now, like the disease, right, the grief of the people. Even it's very sad news, but it should not affect us in both body and mind. Some disease may affect us in the body, but it should not make us very powerless in our mind. We should be strong. We should consider it is as it is. Consider the disease, consider the illness. It always happens. This is the one of the wisdom, to see the reality of things. Even the crisis is very immense, but if we observe it with balancing mind, we note, we learn, and we understand, our mind will be less suffering. As the time is limited, I cannot elaborate or give explanation to all 10 paramis, 10 perfections. So on this Purnima this year, we may not be able to celebrate it, but we can observe the teaching of the Buddha and follow the teaching of the Buddha. This coming Purnima, I would like to remind all about the essence of the Buddhahood, to concern for ourselves
and for authors to convey the Buddhahood, to observe the teaching of the Buddha into our life by doing dana, sila, and panya. Develop Buddha's qualities in ourselves. On behalf of Thai people, may I bless you all in Pali word. Sapphi tiyo vivacchantu sappha roko vinassatu mate. Pavat vantarayo sukhi thikayuko phava aphivatana silissa niccang. Vuttha pacayino cattaro dhamma vatthanti. Ayu vanno sukhang palang tukkha patta janittukha. Payapatta janipaya soka patta janit soka. Hontu sapphe pipanino etta vatta ca amhi sampatang punya sampatang. Sapphe devanumotantu sappa sampatti sitthiya thanang tathantu satthaya silang. Rakhantu sappatha pavana pirata hontu khacchantu thevata kata. Sapphe puttha palappatta paccekananjayam palang. Arahanta nanjate je rakhang phantha mi sappha so. बुद्धं शरणं गच्छामि भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता ये बुद्ध की वाणी बुद्धं शरणं गच्छामि नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. With folded hand, I bow down and offer my reverential salutation at the lotus feet of Lord Buddha and seek his blessings upon humanity. First of all, let me offer my heartfelt respect and gratitude to all of you from the top of the Himalaya, Ladakh, all the dear followers of Lord Buddha. As you are well aware, the Vesak day, the Buddha Purnima day, what we call is the thrice blessed day, the birth of the great Bodhisattva, the would-be Buddha, Prince Siddhartha, and the great enlightenment day of the great Bodhisattva and the Mahaparinirvana of Lord Buddha. The birthday of the Buddha is not the ordinary birth. It is the birthday of light. It is the birthday of wisdom. It is the birthday of happiness. It is the birthday of liberation. Liberations from the will of existence, liberations from the suffering of samsara, and attending the eternal, unconditional, inexhaustible, indestructible bliss of Nibbana. As you all know, that humanity is going through an unprecedented health crisis, uncertainty, fear, and worry caused by
the COVID-19 pandemic. The followers of Buddha can contribute in reducing or in overcoming the fear, the tensions, the uncertainty of life caused by the COVID-19 pandemics, or the holy teachings of Buddha, how we can imply the holy teachings of Buddha in this situation, in this crisis of COVID-19 pandemic. I believe if anyone sincerely and earnestly learn and practice the teachings of Buddha, it would definitely bring a great relief, relaxations, and freedom from fear, worries, and tensions from these COVID pandemics. Because Lord Buddha very, very precisely and clearly teach these kind of situations. The whole teachings of the Buddha is, based on these two issues, 2 points, that there is a suffering in this world, and how to overcome, how to free oneself from this suffering of the samsara is the heart of Buddha's teachings. Therefore, if anyone sincerely learn and practice the teachings of Buddha, it would definitely, without any doubt, will help the humanity to understand this crisis, these situations, and to how to overcome the suffering caused by the COVID-19 pandemics. Let us apply the Four Noble Truths to this situation. Now, Buddha's, the very, very heart of Buddha's teachings is the Four Noble Truths. As a car stand and move on four wheels, the entire Buddhism, the Buddhist teachings, stand and move on these Four Noble Truths. What are the Four Noble Truths? The first Noble Truth is the Noble Truth of suffering. Suffering. And at the moment, whole humanity is going through the suffering caused by the COVID-19 pandemics. And what is the cause of suffering? The second noble truth is the noble truth of the cause of suffering. What is the cause of the truth of suffering? We believe the cause of the suffering is really not very, very ununderstandable or beyond our understanding. This suffering which we are going through is the result of our own karma. Due to the excessive greed and desires, humanity have exploited, humanity have destroyed, humanity has harmed the nature, the Mother Earth, in which we live. Just to fulfill their greed, humanity have polluted the waters, cut the trees, polluted the air, polluted this Mother Earth, and caused tremendous harm to both these Mother Natures, Mother Earth, and the animals, the innocent animals. There is no doubt about it. It is the result of human greed, human ignorance, human ego, and human desires. This is the cause of this, the suffering which we are going through. And what is the third, the noble truth of the cessation of suffering? That it is possible. It is possible for us to overcome this suffering. The third truth is the possibility to overcome. The last one is the noble truth of the path that leading to the cessation of suffering.
And what is the path leading to the cessation of suffering? Understanding our desire, understanding our greed, understanding our ignorance. By understanding this, reducing our greed, our hatred, our egotism, our clinging and attachment, etc., and returning to the normal life, the natural life, and live a simple life, contented life. Then this is the path. The Buddha summarized the Eight Noble Path in 3 ways: Shila, Samadhi, Panya. Following the moral precepts, code of conduct, rules and regulations, right? Respect, regards for all other human beings, other living beings, for the nature, for the air, for the water, for the Mother Earth, for trees, animals, everything. Showing respect, practicing contentment. Buddha have very beautifully mentioned in one of the discourse. Sabbe sankhara anicchati yada panyaya pasati atha nivindanti dukkhe e samago visuddhya. All conditions are impermanent. When one sees this with wisdom, one turns away from suffering. This is the path to purification. This is the path to liberation from suffering. Sabbe sankhara dukkhati yada panyaya pasati atha nibindanti dukkhe e samago visuddhya. All conditions are unsatisfactory. When one sees this with wisdom, one turns away from suffering. This is the path to free oneself from suffering. This is the path to purification. This is the path to liberation from suffering. Sabbe Dhamma anattati yada panyaya passati atha nibindati dukkhe e samago visuddhya. All things are not self. When one sees this with wisdom, one turns away from suffering. This is the path to purification. This is the path to liberation. This is the path to free oneself from suffering. Dear sincere followers of Lord Buddha, let us come together. Let us dedicate this Vesak celebrations, this Bodhisattva, this month, Vesaka month, for the corona-free world. We Buddhists have a responsibility towards the suffering humanity. Buddha have very beautifully, very clearly have explained that our own happiness, our own peace, our own well-being depend heavily on how we care, how we show compassion, how we extend love, compassion, care, respect for others. So the whole humanity is one member, one family, the human family. We are member of one human family. Let me read out, one gatha from Dhammapada. Sukho buddhanang upado, sukha saddhamma desana, sukha sangasa samagganang tapo sukho. Blessed is the birth of the Buddhas. Blessed is the enunciation of the sacred teachings. Blessed is the harmony in the orders. And blessed is the spiritual pursuit of united Tutsika. Dear friends, let us come together. We are so fortunate that we are blessed with the precious human life, and we are blessed with the opportunity to see one side the unbelievable suffering. On the other side, we are so fortunate to have the teachings of Buddha, to understand ourselves and how to protect ourselves from this kind of pandemics and how to help others people.
Yes, friends, come, let us come together. Let us celebrate the Vesak in a true sense, true spirit, not going for the others' worldly things. Dedicate ourselves, offer ourselves to the teachings. Let us absorb the teachings of the Buddha. Let us become one with the teachings of the Buddha and radiate the love and compassion and the light of wisdom towards all directions. I once again extend my heartiest Vesak greetings to all of you, Dr. Harshadip Kamble, Aman Kamble, Mrs. Kamble, and Mrs. Dr. Harshadip Kamble, and everyone. Have a wonderful Vesak Day celebrations. May once again the light of Buddha shines brightly in every corner of the world, dispelling the darkness, ignorance. May this world once again become like heaven. May once again all human beings experience divine life here and now. Sabbitiyo vivachantu sabbarogo vinasato mate bhavantu antarayo sukhi digayuko bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena sabba sanganubhavena sada sutti bhavantu te. Mani padme hum, mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, mani padme hum, om mani padme. पहले मेहमान इंतजार की मिठास को चखना हमें आता है। लम्हों के हैं ये टुकड़े, लम्हों में है कुछ बातें, आजा इनमें ही बना ले चाशनी सी कुछ यादें। મામા તમને અમારી સગાઈ મંજૂર છે? मंजूर छे। दूरियों को एक पल में मिटाना आता है। देश की मिठास, हल्दीराम्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। त्याग मूर्ति तू शांत चित्त तू योग रूप संसारी दया प्रेम मानवते से प्रतीक तुझी ईश्वरी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। त्याग मूर्ति तू शांत चित्त तू योग रूप संसारी दया प्रेम मानवते से प्रतीक तुझी ईश्वरी। जय भीम बोलो जय भीम, जय भीम बोलो जय भीम।
बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध। ने अपना सर्वस्व अर्पण किया और मानवीय मन की कुशल धारा ने इसे आध्यात्मिक संपदा से भर दिया। बर्फीले हिमालय की आगोश में समाया ये प्रदेश अपने आप में अनूठा है। बुद्ध धर्म, इस्लाम और शैव मत, इनकी साझी संस्कृति का गवाह जम्मू कश्मीर और लद्दाख अपनी इस मिश्र संस्कृति के अलग अलग आयामों से हमें रूबरू कराता है। लेकिन इस प्रदेश का बौद्ध संस्कृति से बड़ा गहरा नाता रहा है और ये नाता विकसित होता है महान बौद्ध सम्राट कनिष्क से। कनिष्क, जिनके शासन काल में भारत के चीन और अन्य देशों से व्यापार में वृद्धि हुई और विभिन्न संस्कृतियों का मिलन भी हुआ, और यही वो समय था जब भारत सहित संपूर्ण एशिया में बुद्ध धर्म का प्रचार जोर शोर से चल रहा था। ऐसे में कुषाण सम्राट रहते हुए कनिष्क ने बुद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध शासन के इतिहास में कनिष्क का युग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पार्श्व महाकवि भदंत अश्वघोष, महान बौद्ध दार्शनिक वसुमित्र इसी युग में पैदा हुए और इसी काल में बौद्ध धर्म सफलतापूर्वक मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया में फैल गया। सम्राट कनिष्क इस भूभाग से नहीं थे। लगभग ईसा पूर्व 3री शताब्दी के मध्यकाल में नोमड और पास्त्रल जाति के कबीले मध्य एशिया से दक्षिण और पश्चिम की ओर मुड़े, शायद स्थान परिवर्तन के लिए या फिर अपने जानवरों के लिए चारा खोजने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा हो। खैर, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन अपने इस सफर में इन कबीलों ने सदा के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़ दी और ये लोग बैक्टीरिया के ग्रीक साम्राज्य में बड़ी तेजी से फैल गए और वहां अपना शासन भी कायम किया। भारतीय लोग शुरू में इन कबीला वालों को शक कहा करते थे। हिलमंड नदी को पार करके ये लोग सिस्तान पहुंचे और इन शक शासकों ने धीरे धीरे सौराष्ट्र यानी कठियावाड़ और गुजरात में भी अपनी जड़ें जमा ली। अंत में तक्षशिला और मथुरा भी इनके शासन के अधीन हो गए। नोमड जाति का जो कबीला बैक्टीरिया गया, इसी परिवार की एक शाखा कुषण ने हिंदुकुश पर्वत पार किया। तब इसका नेतृत्व कर रहे थे कडफिस प्रथम। कुषाणों का ये कारवां यूं ही आगे बढ़ा और कडफिस प्रथम, कडफिस द्वितीय से आगे बढ़ते हुए ये कनिष्क तक आकर पहुंचा। इसमें एक बात उल्लेखनीय है कि इसी समय यानी कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ही महान बौद्ध सम्राट प्रियदर्शी अशोक का भी एशिया पर बड़ा गहरा प्रभाव था और जम्मू कश्मीर लद्दाख के इस हिमालयन रेंज में बुद्ध धम्म के प्रचारक सम्राट अशोक के संरक्षण में पहुंच चुके थे। बहरहाल, कुषाण शासकों में कनिष्क, जिनका शासनकाल ईस्वी सन 78 से लगभग 115-120 तक रहा, ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कनिष्क ने राजधानी तो पुरुषपुर यानी कि आज के पेशावर में रखी थी, लेकिन पुरुषपुर से वे काबुल, कश्मीर और उत्तर भारत पर शासन चलाते थे, जो पाटलिपुत्र, बुद्ध गया और नर्मदा तट पर उज्जैन तक फैला हुआ था। कनिष्क ने काशगर, खोतान, यरकंद को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था और इसके बाद कनिष्क रोमनों के समीप आए, उनसे संबंध स्थापित किया। मध्य एशिया व्यापार महामार्ग पर तो उनका नियंत्रण था ही। यह मार्ग बैक्टीरिया की राजधानी से
काशगर आता था और काशगर से चीन जाता था। रोमनों के साथ कनिष्क के मैत्रीपूर्ण संबंध थे और इसी के सहारे चीन के साथ कई बार युद्ध के बावजूद कनिष्क ने चीन से भी संबंध सुधार लिए और यही कारण था कि बौद्ध धर्म सर्वप्रथम इसी रास्ते चीन में प्रवेश कर गया और फैला भी। ईस्वी सन 64 में काश्यप मातंग बुद्ध मूर्ति के साथ चीन पहुंचे थे। काश्यप मातंग के साथ एक बात और जुड़ती है कि काश्यप की एक पत्नी कद्रु से ही नागों की उत्पत्ति हुई है। इनमें प्रमुख नाग 8 है: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक। इन्होंने ही नाग वंश की स्थापना की। अनंत नाग यानी नागवंशियों की राजधानी। नागवंशियों का इतिहास बौद्ध धर्म का संरक्षण और प्रचार प्रसार का रहा है। यानी नागवंश के मूल पुरुष काश्यप बुद्ध मूर्ति के साथ चीन गए और वहां बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आपको याद दिला दें कि कनिष्क के पूर्व बुद्ध मूर्ति बनाने की परंपरा बौद्धों में बिल्कुल नहीं थी। बुद्ध के विविध प्रतीकों से ही उन्हें प्रदर्शित किया जाता था। ग्रीक देवता के उकरण पर बुद्ध प्रतिमा बनवाई गई और वो ही कनिष्क के राज दरबार में स्थापित की गई और इसी के आधार पर चीन और जापान में भी बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। भारतीय इतिहास में कनिष्क की ख्याति उनके युद्ध विजयों के कारण नहीं, बल्कि शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण है। बौद्ध धर्म में उत्पन्न विविध दार्शनिक विचारधाराओं को एकाबद्ध कर उनको एक स्वरूप देने की दृष्टि से आचार्य पार्श्व से प्रेरित होकर सम्राट कनिष्क ने श्रीनगर के कुंडलवन विहार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ संगीति बुलवाई। इसके उपाध्यक्ष महाकवि आचार्य अश्वघोष थे। विश्व प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग अपने यात्रा वर्णन में लिखते हैं कि कनिष्कपुर यानी आज के कश्मीर में हुई इस संगीति में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 500 विद्वान भिक्षु सम्मिलित हुए थे। इस विस्तृत प्रदेश में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। ये भूमि अपने आप में बौद्ध धर्म के कई रहस्य छिपाए हुए हैं। इस क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति से जुड़े कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। जम्मू से 28 किलोमीटर की दूरी पर दरिया चिनाब के किनारे बसा हुआ ये अखनूर से हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य कुषाण काल की कलाकृतियों से जम्मू कश्मीर के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। एनएल हेल्थ केयर एक ऐसा संस्थान जो बचा रहा लोगों के प्राण। कोरोना की इस भयानक विपदा में मानवता के लिए सदैव कार्यरत पद्माकर गणवीर तथा शिल्पा गणवीर कोरोना से सुरक्षा एवं मरीजों को बचाने में सहायक सैनिटाइजर मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, हेल्थ केयर उपकरण, सेफ्टी किट्स, सभी प्रकार के मास्क, पीपीई किट, सर्जिकल इक्विपमेंट्स के लिए आज ही संपर्क करें। एनएल हेल्थ केयर, प्लॉट नंबर 51, गणवीर बिल्डिंग, काशीनगर, रामेश्वरी रोड, मानेवाड़ा, नागपुर। मोबाइल नंबर 9309898849। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही। के ट्रेडिशनल हेल्दी ड्रिंक्स के साथ गर्मियों में रहिए रिफ्रेशिंग। जय भीम, मी सुकृती कुमुदखोडेसर आपणा सर्वांना बुद्ध जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। बुद्ध जयंती म्हणजे वैशाख पौर्णिमेचा दिवस। वैशाख पौर्णिमेला तथागतांची आयुष्यात अति 5 महत्त्वाच्या घटना घडल्या, त्या मी आपल्या समोर सांगत आहे।
पहिली घटना, राजपुत्र सिद्धार्थाचा जन्म. राणी महामाने प्रसूतीसाठी माहेरी जाण्याची इच्छा राजाला बोलून दाखवली. राजा शुद्धोधनाने आवश्यक सर्व व्यवस्था करून राणीला माहेरी पाठवले. रस्त्यात लुंबिनी नावाचे वन लागले. तिथे विश्रांती करण्यासाठी राणीने इच्छा दाखवली व सारे तिथे थांबले असता एका शाल वृक्षाची फांदी राणीने हातात धरली व ती वर ओढली गेली. तेव्हा तिथेच राजपुत्र सिद्धार्थाचा जन्म झाला. तो दिवस वैशाख पौर्णिमेचाच होता. वार मंगळवार, इसवी सन पूर्व 563. दुसरी घटना, यशोधरेचा जन्म. ज्या दिवशी सिद्धार्थ गौतमाचा जन्म झाला त्याच दिवशी यशोधरेचाही जन्म झाला. कोल्य राजा दंडपाणी यांची ती मुलगी. सिद्धार्थ व यशोधरा हे समवयस्क होते. तर तिसरी घटना, सिद्धार्थ गौतम व यशोधरा यांचा मंगल परिणय ज्या दिवशी झाला तो दिवस वैशाख पौर्णिमेचाच होता. चौथी घटना, असे म्हणतात की सिद्धार्थ गौतमाचा जन्म लुंबिनी वनात झाला, पण भगवान बुद्धाचा जन्म हा बुद्धगयेत झाला. हीच ती सर्व जगाच्या दृष्टीने पावन अशी चौथी घटना होय. सगळ्या विश्वातील मानवाचा कल्याणाला मार्ग दाखवणाऱ्या तथागत भगवान बुद्धाला ज्ञान प्राप्ती झाली. तो दिवस वैशाख पौर्णिमेचाच होता. पाचवी घटना, वयाच्या 80व्या वर्षी रात्रीच्या 3ऱ्या प्रहरी वैशाख पौर्णिमा इसवी सन पूर्व 483 रोजी मल्ल देशातील कुशीनगर या ठिकाणी श्रावणात भगवान बुद्धास महापरिनिर्वाण प्राप्त झाले. तो दिवस वैशाख पौर्णिमेचाच होता. वार शुक्रवार. बौद्धांसाठी वर्षातल्या 12ही पौर्णिमा आवश्यक आहे, पण वैशाख पौर्णिमा इतकी वैशिष्ट्यपूर्ण पौर्णिमा अन्य कोणतीच नाही. म्हणून आपण ही पौर्णिमा मोठ्या उत्साहाने साजरी करत असतो. तथागत म्हणतात सगळ्या विश्वातील मानवाचा केंद्रबिंदू हा मन आहे. जसं मनोव्यापार मनोधर्म हे मनातूनच उत्पन्न होतात. ज्याप्रमाणे बैलगाडीचा चाक बैलगाडी ओढणाऱ्या बैलांच्या पावलाचा पाठलाग करत असतो, त्याचप्रमाणे दुःख हा मलिन मनाने कार्य करणाऱ्या व्यक्तीचा पाठलाग करत असतो. जशी आताची कोरोनाची भयावह परिस्थिती, जिकडे तिकडे मृत्यूचे भय पसरले आहे. प्रत्येक जण हतबल झाला आहे, दुःखी आहे आणि ह्या भीतीमुळेच अनेक लोक मृत्यू पळवून घेत आहेत. याच्यातून आपल्याला तथागताची वाणीच बाहेर करू शकते. तथागत म्हणतात तुम्ही वादळाला शांत करू शकत नाही, तुम्ही वादळाला शांत करू शकत नाही. प्रयत्न करणे व्यर्थ आहे. तुम्ही स्वतःला शांत करा, वादळ आपोआप निघून जाईल. इथे मला म्हणावेसे वाटते की तथागताची तत्व प्रणाली आचरणाला मुभा मिळाली. तथागताची तत्व प्रणाली आचरणाला मुभा मिळाली. जीवनामध्ये आज बहरली वैशाखी पौर्णिमा. वैशाखी पौर्णिमा. प्रथम नमो गौतमा तया हो, प्रथम नमो गौतमा. धन्यवाद. जागली पहाट उठ शिंप सडा माऊले, दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पावले. दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पावले. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं